Hello students, my dear students, class 5th. So here children, today we are going to revise chapter 13, the universe. So first thing, in universe we see lot many things like sun, moon, planets, stars, and these all things are like stars though you can see with your eyes. But what about planets? Moon and sun is also visible to us. But to see these planets and to see them more clearly, we use telescopes. Telescope, as you see in this figure, this is the picture of telescope by which we are able to see the celestial objects जो हमारे space में, universe में moon, stars, sun, planets. So these are clearly visible by the means of this telescope. So first that we'll be discussing is about the sun. Now as you know, sun is the center of our solar system. It is a huge ball. किस चीज का बॉल है ये? हॉट ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग gases. And can you name which gas is present in the on the sun's surface? Yes, it is hydrogen gas. And what happens to this hydrogen gas? This hydrogen gas is continuously changing into helium gas. So during this reaction, what happens? A lot of heat and light is given out, and that's why the sun appears to be appear as like a huge hot ball. And the more one interesting thing that is that the light what has been emitted by the sun, that takes approximately 8 minutes to reach the surface of the earth. यानी जो सन रेज हमारे अर्थ पे पहुंचती हैं उनको कितना टाइम लग जाता है बच्चे? It is total 8 minutes required. Okay, so what is the main source of sun's heat and light? So the answer is the reaction in which hydrogen changes into helium gas that produces lot of heat and light on the sun. Then the next thing that we'll be discussing is about the moon. Now, right in your earlier childhood, you had heard about many poems, many stories related to the moon, है ना? And as we see, moon appears in different shapes also. ये सबने ऑब्जर्व किया है? हर दिन देखो मून का शेप चेंज होता है स्लाइटली. सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस मून, सो दिस इज वन ऑफ द नेचुरल सैटेलाइट. अब सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट वो चीज दैट रोटेट अबाउट इट ओन एक्सिस एंड ऑल्सो अराउंड द अर्थ. तो जो मून है ये हमारी अर्थ के अराउंड एक्सिस पे भी घूमता है और हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व भी करता है बेटा. सो देयरफॉर इट इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. एंड इफ वी टॉक अबाउट द मून, if we talk about the moon, if we observe this picture of the moon, you see that the surface is not very smooth, it is very rough. The surface of the moon is very dry. It is full of rocks, fine dirt on its surface, and it has large circular hollows that causes craters. बड़े बड़े गड्ढे हैं इसके सरफेस पे. और ये क्यों है बेटा? Because as there is no air, no water on the moon, and these are fully covered with rocks and the fine dirt on its surface. तो बहुत uneven है. दिखने में तो देखो बोलते हैं ना like you are so beautiful like moon, but actually अगर हम moon को ध्यान से देखें, so the moon is full of rocks and fine dirt, and therefore there are the large circular hollows called craters. Okay, along with that, this moon is not having any atmosphere also, nor it show any presence of water. तो life इस पे possible है moon पे? Can we survive on moon without water, without air? No. So therefore there is no protection from the strong rays of sun also. जैसे हमारे अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है, हमारे अर्थ के अराउंड ओजोन लेयर है जो हमको सन रेज से प्रोटेक्ट करता है. बट ऑन द सरफेस ऑफ मून देयर इज नो सच एटमॉस्फेयर एंड देयरफॉर नथिंग प्रोटेक्ट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग रेज ऑफ सन. देयर इज नो प्रोटेक्शन फॉर इट. सो इफ वी टॉक अबाउट द टेम्परेचर्स that we observe on the moon, so during daytime maximum temperature हो जाता है बेटा near about 123 degree Celsius, और नाइट में क्या होगा? minimum about minus 233 degree Celsius. So which is unbearable, and it is very very hot during daytime and very very cold during
night time. So all these features make the moon a place where no life is possible. If we talk about the moon's gravity, अगर हम ग्रेविटी की बात करते हैं, ग्रेविटी क्या होता है? लाइक अर्थ के ऊपर आप बॉल से खेलते हो, इफ यू थ्रो बॉल टूवर्ड्स द स्काई, अगेन इट कम्स बैक टू द अर्थ. व्हाई इट हैपन्स? क्योंकि अर्थ क्या है? इट एक्ट एज अ मैग्नेट, it attract everything towards it. In same manner moon is also having some gravity, लेकिन जो moon की gravity है that is just 1/6 of the gravity of the earth, यानी 1/6 है बेटा. Like suppose if a person is weighing 60 kgs on the earth, so on moon the person will weigh ओनली 10 kgs, यानी 1/6 हो जाता है ग्रेविटी अर्थ का. सो वेटलेसनेस वाली फीलिंग आ जाती है, हल्के महसूस होते हैं हम वहाँ पे, ठीक है, बिकॉज मून इज हैविंग कंपेरेटिवली लेस ग्रेविटी एज कंपेयर टू दैट ऑफ अर्थ. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब मून इज व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट? ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है, ट्रांसलूसेंट है. व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज? सो नो डाउट इट इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट. इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग इट्स ओन लाइट. तो भाई मून लाइट कैसे बनती है फिर? सो हाउ दिस मून लाइट इज फॉर्म? सो द आंसर इज बेटा, एज यू नो दैट मून इज एन ओपेक ऑब्जेक्ट एंड सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट. तो सन क्या करता है ड्यूरिंग डे टाइम? वॉट एवर द सन रेज दैट फॉल ऑन द मून, दे आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ. और अर्थ पे कौन रहता है? हम रहते हैं. और हम जब ऊपर स्काई देखते हैं, सो वी आर एबल टू सी द मून, एंड दिस इज हाउ द मून अपीयर्स टू अस एज शाइनिंग ओवर देयर. ओके.